Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today we are going to talk about a topic in Chinese language, and that is change of tone marks on Chinese words. When we write a Chinese word, we write a tone mark on it. Without tone marks, it is impossible for you, being a foreigner or being a native speaker, to pronounce a sentence properly. So I'll write a sentence and I will tell you about the individual tone marks of the words in the sentence, and then I'll tell you about the tone changing rules when certain tones follow each other in a sequence and how these tone marks change. So the sentence is ni怎么. I'm writing this sentence with its original tone marks, okay? With every word using its original tone mark individually. 你怎么不叫. Keep this in mind that I am writing these words with their original tone marks. 我起来. Now the meaning of this sentence is 你这么不叫我起来? Why didn't you wake me up? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? इस जुमले का मतलब ये है, चीनी ज़बान में जब हम ये टोन मार्क्स लिखते हैं तो इन टोन मार्क्स के कुछ रूल्स है, कुछ कवानीन है, कुछ ज़वाबित है जो लागू होते हैं इन अल्फाज पर. जब कोई टोन मार्क जो है वो लगता है किसी चीनी ज़बान के लफ्ज़ पर, तो उसको जब ये दो टोन मार्क्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं सीक्वेंस में, यानी एक टोन मार्क के बाद दूसरा टोन मार्क, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि 3+3 मतलब कि तीन टोन मार्क्स अगर किसी लफ्ज़ में या किसी सिलेबल में आ जाते हैं, तो मतलब अगर एक तीसरी टोन मार्क के बाद, यानी एक तीसरी टोन मार्क की सिलेबल के बाद तीसरा टोन मार्क वाला सिलेबल आ जाता है, तो पहला जो तीसरा टोन मार्क वाला सिलेबल होता है वो सेकंड टोन मार्क में तब्दील हो जाता है. इफ़ one third tone mark syllable is followed by another third tone mark syllable, then we change that first third tone mark into a second tone mark. So I'll just write it in speaking, okay? Keep this in mind that in speaking, so when first third tone mark is followed by another third tone mark syllable, so the first third tone mark syllable changes into the second tone mark. So I have written this sentence in its original tone marks. You can see that the word ni has a third tone mark, 怎么 in zhen is having a third tone mark. If you can see, I'll write it clearly, okay? 怎么不叫我起来 okay? So if we write it in the form of speaking, we can write it like this. If you speak it, you will speak it like this: 你怎么 The original tone marks of pu is fourth tone mark, but here is two fourth tone marks syllables are following each other, so the first fourth tone mark will change into a second tone mark like this, and that will remain at its own place. 你这么不叫
Okay, now here you see again we have two third tone marks. So the first third tone mark of wa will change into second tone mark, and this will remain at its own place, and the sentence will look like this. 你这么不叫我起来，你这么不叫我起来。Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? सोने से की बात कर रहे हैं कि तुमने मुझे सोने से क्यों नहीं जगाया, उठाया. So 你这么不叫我起来，你这么. So this is how the tone marks actually changes, and this is how the tone marks actually change in a Chinese sentence when three third tone mark syllables are following each other. Then the first third tone mark will change into a second tone mark, and the second third tone mark will remain at its own place. And when two fourth tones are following each other, then the first fourth tone mark changes into second tone mark, and the second fourth tone mark remain at its own place. This is how it works while speaking a Chinese sentence. So 你这么不叫我起来, if you pronounce it with these tone marks, then it will sound different. 你这么不叫我起来. But if you pronounce it with the tone marks rules, then it will sound like 你这么不叫我起来，我起来. Why didn't you wake me up? This is how we write it and how we speak it. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. इसमें हमने टोन मार्क्स के चेंज होने की, तब्दील होने की बात की कि अगर दो थर्ड टोन मार्क्स के अल्फाज एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नी का लफ्ज़ यानी ये वाला, इसका अपना टोन मार्क थर्ड टोन मार्क है, और इसके बाद सम्मा आ रहा है जिसका भी टोन मार्क थर्ड टोन मार्क है. तो दो थर्ड टोन मार्क एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा आ रहा है. तो पहला जो थर्ड टोन मार्क वाला सिलेबल है, जो लफ्ज़ है, इसको आप सेकंड टोन मार्क में तब्दील करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये नी चेंज हुआ, नी. सम्मा अपनी जगह रह जाएगा क्योंकि वो दूसरा टोन मार्क, जो दूसरा थर्ड टोन मार्क है, वो अपनी जगह रह जाएगा. और यहाँ पे मैंने एक दूसरी बात भी की है कि पू के लिए भी एक रूल है, यानी पू का जो अपना टोन मार्क है वो फोर्थ टोन मार्क है, लेकिन जब ये इसके बाद मतलब दूसरा फोर्थ टोन मार्क आ जाता है तो इसका टोन मार्क जो कि चौथा है, फोर्थ टोन मार्क है, वो तब्दील हो जाता है सेकंड टोन मार्क में, और दूसरे लफ्ज़ का जो टोन मार्क है फोर्थ होगा, वो अपनी जगह रह जाएगा. तो ये पू जाओ की जगह पू जाओ बन जाएगा. और यहाँ पे फिर दो थर्ड टोन मार्क आ रहे हैं, तो पहले वॉ का टोन मार्क जो है वो तब्दील हो जाएगा सेकंड टोन मार्क में. सो ये बन जाएगा वो ची लाए. सो एंड लाई जो है उसका मतलब है आना, कम. सो नी चम पू जाओ वो ची लाए, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया. So I hope that you would have liked this video. Don't forget to subscribe to Chinese Language Made Easy. We are going to meet each other in another interesting video. See you, 再见.